मैं दोनों फेडरेशंस, ऑल इंडिया फेडरेशन को और वेस्टर्न इंडिया फेडरेशन को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप लोगों का नेक काम चलता है। मिलजुल करके हम लोग को काम करते रहना चाहिए। अलग अलग प्रांतों से फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स देयर आर मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स हियर एंड वी वेलकम यू and we wish that you can join all of us together in promoting this wonderful industry, this wonderful craft, and make India yet another proud nation for making the best products that are there in films. We celebrate 101 years. This is very auspicious, and we hope that we continue to grow. I was reading an Economic Times report recently that despite all the economic chaos that is happening in the world, the film industry is one industry that has always shown a growth path. It has always been doing better every year, and may it continue to do so in the hundreds of years to come, and many, many more years also. We hope and pray that with all your cooperation and your hard work, this industry will indeed rise and create world records and world recognition, as it has been doing in the past. Thank you once again for having me here and for giving me the love. Sir, there could not be a better platform than this to stress on the fact that for every 2 people who face the camera in the entertainment industry, there are sometimes 200 people behind the camera. And the fact that on this stage right now, there's one gentleman who is the face of the Indian film industry, the face in front of the camera, and the rest of us, our faces are behind the camera, who are faceless craftsmen. And I think there could not be a better platform to give recognition to the various crafts of the entertainment industry. Shri Bachchan ji to please felicitate our President, the All India Film Employees Confederation, Shri Dharmesh Tiwari, with a memento. We would request outgoing Honorary General Secretary of IFAC, Aparna Ghatakji, to please come on the dais. Aparna Ghatakji. Hey, Rakesh. Now invite Mr. Himanshu Bhatt, Vice President of the All India Film Employees Confederation. Madam. Mr. Bachchan presenting a memento to Mr. Himanshu Bhatt. And then I would request Treasurer IFAC, Mr. G. Shiva, to please come on the dais and take it. I would now invite Mr. N. Shankar, Joint Secretary, All India Film Employees Confederation, Mr. N. Shankar, to come up and receive a memento from Mr. Amitabh Bachchan. Friends, please ये थोड़ी सीढ़ियों को यार ताकि आ पाए लोगों पर. Then the President, FEFC from Chennai, Mr. Amin Sultan. Please give way to our esteemed presidents of various federations who are rolling in from all over the country to come on the dais. Friends, this is our day. This is the day of each and every worker of the entertainment industry. लोगों की जिंदगी निकल जाती है to be graced by the presence of Shri Bachchan. Please make the most of this momentous occasion. I now invite Shri Swaroop Bachchan. Next, I would like to call upon President from Hyderabad Federation, Shri Kumara Venkatesh. Popular president there, isn't it? Everybody, not only that section from Andhra Pradesh. The very popular star too from Karnataka. Can we have Ashish on the stage? I would like to invite next Shri Rajendra Sonam, Joint Secretary. I think our members are behind taking care of all the guests. Now he wants to pick the trophy for him. Rajeshwar Reddy ji.
Mrs. Stan Shiva, please come on the dais, sir. The newly elected committee members, हमारे बहुत ही चहेते संगीतकार श्री रविंद्र जैन साहब यहाँ पर आ चुके हैं। उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। IMPA के प्रेसिडेंट श्री TP अग्रवाल जी, you are requested to please come on the dais, sir, for this release of the souvenir. दिलीप पिटवा जी, आर्ट डायरेक्टर अभी तक लगता है स्टेज बना रहे हैं। सर, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज अनवील दिस souvenir. सभी के हाथ में एक souvenir दे दी जाए। आशीष रेगो, यू आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू कम ऑन द डाइस। सुरीली संगीत की वाणी होता है जिसे कहते हैं रविंद्र जैन की जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। क्या रामायण, क्या कृष्ण, क्या द्रौपदी, जो हो, चाहे वो माइथोलॉजी हो, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग्स की धरवान हो, चाहे वो राशि के विवाह का संगीत हो। Shri Amitabh Bachchan has just released the souvenir. The All India Film Award. Once again, many thanks for inviting me here. I just want to say that we've lost a very iconic member of the film industry in Akkineni Nageswara. And he was a legendary figure in the Telugu film industry. A very loved human being, very considerate, and he had created a huge empire, huge number of fans in the Telugu film industry, and we, the entire community here, pay our condolences and respects for him, and our prayers are with his family. Mr. Pitwa, who missed out on the presentation. Mr. Pitwa, Mr. Ashish Remo, Mr. Rajendra. आशीष रेगो, जुगतल, आशीष रेगो, जुगतल, मन और हमारे ट्रेजरर महोदय हैं। और राजेंद्र, आपके लिए कहा जाता है, उनके आते ही भरी बस्म के अफसार गए, दिल गया, नजरें गई, लोगों के ईमान गए। सर ऐसा क्यों होता है? जल्जला से आराम से लेके आएगा मैडम आराम से। 101 वर्ष पूरे हो गए फिल्म इंडस्ट्री के, और वेस्टर्न इंडिया एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ऑल इंडिया फेडरेशन का एक सालाना महोत्सव है, 21 वर्षों के बाद मुंबई में आया है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये जितने भी लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे काम करते हैं, जिनके बारे में कभी सुना नहीं जाता, उनका नाम भी नहीं लिया जाता, उनके बारे में हमारी ख़ास ये एक दरख्वास्त है कि उनको एक अवसर मिले, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम बन पाते हैं। उनके काम को हम उनकी सराहना जो हम करना चाहते हैं वो कभी पर्दे पर नहीं होती है, लेकिन उन्हीं की वजह से हम लोग हैं। इसलिए मेरी ओर से उन सबको बहुत बहुत बधाई।